हेलो एंड वेलकम बैक। फाइनली हम आ गए हैं उस पर्टिकुलर शो के साथ जिसके लिए आप वीक लॉन्ग इंतजार करते हैं। बट बिफोर दैट हैप्पी दिवाली टू ऑल। और नया विक्रम संवत 2081 चालू हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ये पूरा का पूरा अक्टूबर सीरीज बहुत ही कंफ्यूजन भरा, बहुत होकस पोकस मूवमेंट्स रहे। फिगर्स हैवी थे और कंफ्यूजन भी इक्वली हैवी था। तो चलिए देखते हैं नवंबर सीरीज में क्या होने वाला है। और कुछ एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स हैं जो हम आने वाले एक दो वीडियोस में आपके साथ करेंगे। तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे पा रहा हूं। बट हमारा जो वीकली डोज है वो लेने के लिए हम पहुंचते हैं एक एक के पास और देखते हैं कि क्या है उनके पास जो वो हमसे शेयर। हाय अंकित, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली एंड Good हैप्पी evening. न्यू विक्रम संवत 2081। Thank you. Good evening. Wish you the same and wish all our listeners a very happy Diwali. May this year be very prosperous for everyone. थैंक यू। हाउ वाज द वीक? प्रॉस्पेरस तो नहीं हो पाया। Well, what do I say? Uh, I think एक तो दिवाली के वजह से truncated week था. So we had only 4 sessions. Today is of course Muhurat Trading, तो वो उसका तो चलो ठीक है. That is we cannot count that as a trading day as राइट। such. But इस week का highlight अगर आप देखें तो the way it closed last week, I expected downside to continue क्योंकि बहुत weakness थी last week भी, वही weakness continue हुई है. But what is there are 4 or 5 major technical points that I have noticed in this weekly chart, which I'm going to share with everyone. So basically, the volatility, the VIX, India VIX, has again spurred up like very drastically. If you remember, मैंने last week वीडियो में बोला था कि 13 से 14 के बीच में है. लास्ट 2 वीक से इनफैक्ट 12, 13, 12, 14 ऐसे अप एंड डाउन चल रहा था, रेंज में चल रहा था मार्केट. However, this week it has spiraled up to 16.2, राइट। and it has closed the week at 15.5, which is again higher than what it has achieved in the last 2 weeks combined. गॉट Okay, इट। so that ये तो हो गई निफ्टी के ये वॉलेटिलिटी की बात, मार्केट्स की वॉलेटिलिटी की बात. नाउ वी लुक एट एक्चुअल निफ्टी. इफ यू सी एंड टू एंड निफ्टी this whole week, end to end, it has touched a weekly low of 24 150, around 158 or something like that, and it has touched the weekly high of 24 492 or 482. So we are looking at only 340 points from weekly high to weekly low for 4 trading sessions. We are looking at only 340 points. राइट। सो आप देखिए निफ्टी का जो रेंज है, कई कई बार दिन में 340 पॉइंट का रेंज हो जाता है, एंड उसमें भी आपको विक्स 13 का दिखता है. कई कई बार पूरे वीक में 340 का रेंज होता है, उसमें आपको 16.5 का 16.25 का विक्स दिख रहा है. ओके, सो व्हाई? नाउ आई विल टेल यू व्हाई. The week began with short covering rallies, क्योंकि लास्ट वीक के जो शॉर्ट्स थे ये एक्सपायरी वीक थी, so it was kind of expected कि शॉर्ट कवरिंग थोड़ी रैलीज आएंगी. आई मंडे आई, ट्यूसडे आई, वेडनेसडे भी it made an attempt, but all those rallies on a daily basis got sold off, राइट। sold in. So every day's chart after 2 o'clock was on the downside. Thursday specifically and Wednesday specifically. Thursday, the chart was down from the beginning and it just went down. Okay. ये पूरे अप डाउन के सिनेरियो में, लेट मी टेल यू, द निफ्टी मेड अ डबल बॉटम at 24,152 and 24,168. 20 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम बनाया है
इस रेंज मतलब सक्सेसिव डेज पे, एंड इट हैज मेड अ ट्रिपल टॉप बिटवीन 24,490 एंड 24,475, अगेन 15 पॉइंट की रेंज में ट्रिपल टॉप बनाया है इस वीक. Now you understand why VIX is so high, even though there is only 340 point movement. सिर्फ 340 पॉइंट में दो बार नीचे जा चुका है, दो तीन बार ऊपर जा चुका है इस रेंज में. So So you know, how so do we that read it? Like, what do you see in this? Because frankly, I was tracking the VIX, but the point that you put forward was that there were times in the month of September that there were intraday movements of merely. There were massive movements of 300, 400 points, but the VIX was quite low. And that was not something that I could actually think about. And that is something that is actually making me think about it now, because I believe these were the parameters of VIX in the month of August. The entire September, when the market was so high and making such kind of movements, the VIX was not so high. So what are we deriving out of it? If we could just simplify it for our viewers, what is that hidden fact that you have come out with? I'll just put it across very simply, and this also slowly translates into what we should do in the next week. What should we Right. can expect? Okay, double bottom at Hmm. 24 150 160 levels makes that a very strong support zone. Okay. करेक्ट. ये पहले Right. से एस्टेब्लिश हो चुका था, क्योंकि लास्ट वीक भी 24,168 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा था. Hmm. इस बार भी क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा है. ठीक है. इट हैज मेड इंट्राडे बॉटम्स एंड गॉन अप. Okay, now that is very strong support. 24,475 and Hmm. 24,492, this is a difference of 17 points, right? इस रेंज में ट्रिपल टॉप. Hmm. Okay, this makes it a very strong resistance. Correct, टेक्निकली इट्स साउंड, इट इज अ वेरी Hmm. स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो हमारी रेंज क्या हो गई? 350 पॉइंट की रेंज हो गई. सच अ हाँ. शॉर्ट रेंज. Now, normally I say in a video, I say that this is a broad range. Take trading calls within this range. Right. इस वीक मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा, इसके बाहर जाए तो ही कॉल लीजिएगा, तो ही कोई ट्रेडिंग कॉल लीजिएगा. Why? I'll tell you. Double top, sorry, triple top, double bottom. The Hmm. reason it is not breaking or taking so much effort into breaking that is because जो लेवल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वो थोड़ा स्ट्रांग है. इट मे रिक्वायर एडिशनल ट्रिगर. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ न्यूज फ्लो. इट कैन बी, इट कैन बी समथिंग लाइक कुछ एक फ्रेश अटैक हो गया मिडिल ईस्ट पे. देखिए, Hmm. रिजल्ट्स जो है मोटा मोटी सब रिजल्ट्स अब आ चुके हैं लगभग. द बिगर रिजल्ट्स आर इन. सो आई डू नॉट सी, जो अक्टूबर में पूरे अक्टूबर एफआई सेलिंग आई है ये बोल के कि इंडिया में डिमांड स्लो डाउन है एंड रिजल्ट्स आर शोइंग वीकनेस एंड एवरीथिंग. आई थिंक दैट रीजन कैन नॉट बी स्ट्रेच टू फार नाउ. Hmm. प्लस That दे has हैव, been discounted already. yes, plus they have sold to the tune of 1 lakh crores in the whole Right. month. Okay, I don't think there is further pain, pertaining to that particular reason that is there. I don't think और उसमें और रीजन में कोई और सेलिंग आनी है. बट what I feel is that ये जो 24,150 वाला जोन है, if this breaks again, technically it will get weak, shorts will be created. But to break this, Hmm. we need some trigger. तो वो कोई बैड न्यूज या कोई कॉज ऑफ कंसर्न, कोई अनसर्टेनिटी, कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ऑयल प्राइसेस, इट कैन बी अमेरिकाज इलेक्शन आउटकम, इट कैन बी एनीथिंग. अगेन 24,500 जो 24,490 का जो ऊपर का जो वो है, वो ऊपर तोड़ने के लिए भी एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए. तो इट कैन बी एनीथिंग.
anything that is perceived as positive Right. can be a reason to go across 24,500 decisively. Once we do that, somebody can take a, फिर buying zone बन जाती है, फिर fresh Hmm. buying. So once we go beyond that, I would advise, take a call and buy and then wait. Okay. Once we go below 24,150, I will again advise take a call and create a short position and, uh, do that. Take a short position and wait. But within this short range, it is extremely volatile, and I don't see it going either upwards or downwards without the trigger. तो Right. अगले वीक के लिए जैसे आप बोलते हैं, लास्ट में आप बोलते हो कि हमें कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए अगले वीक के लिए। अगले वीक के लिए मेरा यही है, मतलब कि आप ये रेंज में लुक फॉर, फॉलो न्यूज क्लोजली, look for potential triggers. Okay, then see how much that news is impacting the market. Agar if it is actually genuinely a trigger big enough to throw it beyond this short range, 24,500. Right. 24,500 या 24,150, तो Hmm. अगर ये रेंज ब्रेक होती है, जो हो सकती है बहुत इजीली, मतलब आई एम नॉट Hmm. सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फॉर फॉर निफ्टी, लाइक आई सेड इन Hmm. द पास्ट, डेली इंट्राडे मूवमेंट भी इससे ज्यादा हो चुका है। हाँ. तो मतलब ये रेंज वीकली बेसिस पे ब्रेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। वन और टू बैड न्यूज कैन ब्रेक इट वेरी इजीली, and one or two good news can push it up again very easily. But I am advising to take a call, whatever you want to take, a buy call or sell call. That's of course entirely up to the investor. But take a call beyond this range, because nothing decisive is happening within this range. You understand? Got it. Got it. Got it. Okay. So now, as we always do, in the end, I believe इस बार हमारी समरी थोड़ी सी अलग हो गई है। एके हमें ये एडवाइस कर रहे हैं that till the time we are in this range, we should not just jump and take a trade. We should wait for the news to come in or any sort of trigger, any sort of data point to come in, so that there is a momentum build up, there is a strong enough trigger to breach the lower range or the top range, and then only we should initiate the trade, because in this small range taking a trade is not advisable, and only once we break the range then we should take a trade. Till that time, I believe you can continue with your Diwali party hangovers and stay live and do nothing at all. Absolutely, absolutely, Chali, absolutely. amazing it was. For the first time, I believe, because we have been doing this weekly roundup for now many months now. For the Yes, first yes, time, I'm taking this idea from AK back home, that you really don't need to do anything till the range does not breaks. And absolutely. frankly, I have been following many things on the net. I have been following many information on the TV and everything. The particular point that you came out with a high VIX and a low range, that was not something that people are usually talking about. And I believe Yeah. that's the reason we all wait for this weekly roundup and to get in touch with you to get such kind of information out. It was amazing talking to you and learning as to what we can see in the week ahead. And once again, a very happy Diwali and happy weekend. Thank you. Thank you. Happy weekend. Happy Diwali. All right. Bye Thank bye. you. Bye bye. Bye.